Virtual greetings everyone. Today we are going to start the word problem based questions related from the chapter multiplication and division of fractions. Before starting the concept of the word problem questions, we will discuss about singular and plural. Singular and plural. Singular means single, like one book, one pen. And plural of one book will be equals to many books. One pen, plural of one pen is equals to many pens. With the help of this concept, we can easily solve the word problem based question related from the chapter multiplication and division of fraction. For multiplication and division of fraction, if we have cost of one quantity, अगर हमारे पास किसी एक क्वांटिटी की कॉस्ट गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ मैनी क्वांटिटीज, और हमें बहुत सारी क्वांटिटीज की क्या फाइंड आउट करनी है, कॉस्ट फाइंड आउट करनी है. इन दिस केस वी विल डू मल्टीप्लिकेशन. सपोज वी हैव अ बुक. हमारे पास वन बुक है एंड द कॉस्ट ऑफ वन बुक इज ₹50. यहां पर क्वांटिटी कितनी है? ओनली one, and the cost of one book is ₹50, and we have to find the cost of two books. पहले देखो हमारे पास कितनी बुक्स है? ओनली one, and now we have to find out the cost of two books. अब हमारे पास क्वांटिटी क्या हो गई है? ज्यादा हो गई है. So in this case we will do multiplication. जब हम वन क्वांटिटी से मोर क्वांटिटी की कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं, so in that case we will do multiplication. So cost of two books will be equals to 2 multiplied 50. It will be equals to ₹100. तो cost of two books क्या हो जाएंगी हमारे पास? Equals to ₹100. Let's take an example to clear this concept. Example number 1 is, if the cost of one pen is ₹20 1/2. If the cost of one pen, अब आपके पास क्वांटिटी कितनी है? वन पेन है. Then find the cost of three by four pens. Four by three pens. If the cost of one pen, हमारे पास क्वांटिटी कितनी है? वन पेन की है. If ₹20 1/2, वन पेन की कॉस्ट कितनी है? ₹20 1/2. Then we have to find the cost of 4 by 3 pens. अब हमारे पास कितने पेन हो चुके हैं? 4 by 3 pens.
20 is to 1 by 2 multiply 4 by 3. Firstly we will solve the mixed fraction 41 by 2. After that we will multiply by 4 by 3. The result will be equals to 164 divided by 6 rupees. You can convert it into mixed fraction also. Same as like in another case. If the cost of 4 by 3 pence is rupees 20 is to 1 by 2. In this case, we have 4 by 3 pence. अब हमारे पास कितने पेंस हैं? 4 by 3 pence हैं. And we have to find out the cost of 1 pen. Cost of 4 by 3 pence is rupees 20 is to 1 by 2. Now we have to find out the cost of 1 pen. अब देखो पहले क्वांटिटी हमारे पास कितनी थी? 4 by 3. मोर क्वांटिटी थी. Now we have to find out the cost of 1 pen. अब हमारे पास लेस क्वांटिटी में हम चले गए हैं. So in that case we will do division. तो इस केस में हम क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे. So cost of 4 by 3 pence is rupees 20 is to 1 by 2. We have to find out the cost of 1 pen. अब हमें 1 pen की cost find out करनी है. So in that case we will do division. 41 by 2 divided by 4 by 3. In the case of division of fractions, हमें पता है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस में हम क्या करते हैं? फर्स्ट फ्रैक्शन रिमेन सेम. पहली फ्रैक्शन हमेशा सेम होगी. डिवाइड विल बी चेंज इनटू मल्टीप्लिकेशन एंड रेसिप्रोकल of the second fraction. It will be equals to 2 by 3. So cost of 1 pen will be equals to rupees 41 by 3. We can convert it into mixed fraction also. So cost will be equals to 13 is to 2 by 3. I hope students you have understood the concept of multiplication and